Hello everyone, in this video we will see 30 most important MCQs questions from the history chapter number first, the rise of nationalism in Europe. Okay, the question number first is, who painted the famous artwork The Dream of Worldwide Democratic and Social Republics? The correct answer will be Frederick Soddy. Next question is question number second. The question is, which country was ruled by Napoleon? Which country? Then answer will be France. France will be correct answer of this question. Next question is question number third. What was the Napoleonic Code introduced in 1804? The answer will be Civil Code. Okay. Next question is question number 4. Who founded Young Italy? Who founded Young Italy? The answer will be Giuseppe Mazzini. Full name क्या है? Giuseppe Mazzini. Next question is, the Congress of Vienna was held in 1815. Next question is, who was the chief architect of the Congress of Vienna? The answer will be Metternich. Duke Metternich इसका full name है. Next question is, which ideology emphasizes individual freedom and equality before law? The answer will be liberalism. Next question is, which country led the unification of Germany? The answer will be Prussia. Next question is, who became the first German emperor in 1871? The answer will be William I. Next question is, who was known as the Iron Chancellor? What is the correct answer of this question? The answer will be Ottoman Bismarck. Next one is, which kingdom played a leading role in the unification of Italy? Then answer will be Sardinia Parliament, Victor Emmanuel II. ठीक है, ये स्टेट नेम है सार्डिनिया पार्लियामेंट और यहाँ के किंग का नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड. हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पार्लियामेंट? द चीफ मिनिस्टर कौन था बच्चों? कैवियोर. इसका पूरा नाम है काउंट कैमिलो डी कैवियोर. Who led the famous expedition of the thousands? Expeditions of the thousand. The answer will be Garibaldi. Next question is, who became the king of unified Italy in 1861? Then answer will be Victor Emmanuel II. याद रखेंगे, इटली जो यूनिफाई हुआ था वो हुआ था 1861 में और जो जर्मनी हुआ था वो हुआ था आपका 1871 में. रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मोमेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. हु कलेक्टेड जर्मन folk songs and tales? The correct answer will be Grimm brothers. Next question is, which event is considered the first clear expression of nationalism in France? The correct answer will be French Revolution. Next one is, the Zollverein was a custom union. Okay, Zollverein was formed in 1834. Next one is, which empire ruled much of Eastern and Central Europe? The correct answer will be Habsburg Empire. Next one is, what does nationalism mean? The nationalism means loyalty to a nation. Next one is, which artist visualized nations as female allegories? The correct answer will be, what is the correct answer? The correct answer will be Delacroix. Next one is, the female allegory of France was called? The correct answer will be Mediane. Next one is, the female allegory of Germany was called Germania. Next one is, which revolution forced Louis Philippe to flee France? The correct answer of this question will be 1848 revolution. 26 number. What was the Frankfurt Parliament? The Frankfurt Parliament was a German National Assembly. Next one is, where was the Frankfurt Parliament convened? The answer will be Frankfurt Church or St. Paul.
नेक्स्ट वन इज which region was rich in coal and iron and became important for German unification? The correct answer will be Rhineland. Next one is which treaty recognized Greece as an independent nation? The correct answer will be Treaty of Constantinople जो कि 1832 में हुआ था. ठीक है, और ऑटोमन अम्पायर ने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब हुआ देन ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करा गया. नेक्स्ट वन इज एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच यूरोपियन पावर सपोर्टेड ग्रीक इंडिपेंडेंस. देन आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विच यूरोपियन पावर सपोर्टेड ग्रीक इंडिपेंडेंस. ऑप्शन ए ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. ऑप्शन बी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. ऑप्शन सी इटली एंड स्पेन. ऑप्शन डी प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट द करेक्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आप लोग इसको एक दो बार बस देख लेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मेमोरीज में हो जाएगा. ठीक है, और जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, एमसीक्यूज फॉर्म में तो है, बट ये लॉन्ग आंसर्स में भी ना जब आपको ये चीज़ें लर्न होगी देन आपको ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो उसमें आपको जब लॉन्ग आंसर लिखोगे देन उसमें भी ये सभी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए. देन इसीलिए आप लोग 1 टाइम्स 2 टाइम्स जब भी आपको टाइम मिलता है एक बार ज़रूर इसको देख लेंगे. ऐसे क्या होती है पूरे आपके चैप्टर्स एक बार रिवीजन हो जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में. ओके एवरीवन, थैंक यू.